good morning. It's me, Mridul Verma, owner and founder of Kai Chitra by Mridul. I'm a newborn maternity and family photographer. And here we are at Gujarat College of Photography, day 2. We're done with the day 1 with the bang. बहुत मजे आए. If you haven't watched that video, please go watch it. Or student explore, different kind of fashion photography, glamour photography, audio photography in terms of lighting. We tried different lighting. We tried different concepts. So today we are going to explore nature, macro, and bird photography. After that, we are leaving for architecture and interior. It's 6:50 right now. Students जो थे वो 5:50 assemble हो गए थे I guess यहाँ पे. Are we ready? Yes. Are we ready? Yes. Are we ready? Yes. ऐसे लग रहा है पूरे जोर से बोलो जय माता दी. So yeah, without further ado, let's get started. जो भी बर्ड्स तुमने अभी कैप्चर किए वो सब इसमें दिख रहे हैं. किस मंथ में आते हैं वो पीक आ रहा है कि इस मंथ में ये बर्ड सबसे ज्यादा पीक होते हैं, राइट. तो इस तरीके से कुछ एप्स आती हैं जो पर्टिकुलर को ट्रैक भी करती हैं ये बर्ड्स कहाँ हैं. आया समझ में? Hi guys, so it's 1 p.m. right now. We are done with our bird photography, nature photography and wildlife photography. Now we are here at Summer Palace to explore the interior shoot and architecture shoot. So we have split our student in 5 different batches, from which 2 different batches are going inside to explore interior shoot and the other 3 batches are exploring the architecture outside. So yeah, let's go, let's begin the shoot now. I'm gonna show you the first room where students are gonna explore the interior shoot. First of all, this is a very beautiful palace. We have beautiful interior and marvelous exterior here. ये private property है जो कि बहुत ही खूबसूरत property है. हमें यहाँ पे 2 rooms में allot किया गया है. पहले वाला ये है, this is a green room and it has very rich emerald green color over it. The color screams richness. Okay, another room is this one. This is a very pretty pink room. Let's have a look. Okay, so we got another room connected to the pink room. This is a blue room. Actually, ये थोड़ा सा bedroom kind of है. हमारे सारे students जो हैं वो उसको explore कर रहे हैं. अगर हम बाहर का जो hall room है और bedroom है उसको अगर हम देखें hall room से bedroom को, तो there is a composition of frame in frame create होती है. एक ही कमरे में बहुत सारी compositions हैं. बाहर वाले हैं ना, उनके पास ट्राइपॉड नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको इंटीरियर में ट्राइपॉड कंपल्सरी क्यों? क्योंकि आपका लाइट कम है. अब लाइट कम है तो उस केस में आपको शटर स्पीड जो एक्सपोजर टाइम वो ज्यादा रखना पड़ेगा और आपको डिटेल चाहिए तो आप स्टॉप नंबर बढ़ाओगे, आईएसओ तक खींच नहीं सकते. तो इंटीरियर में तो ट्राइपॉड मस्ट है. इसमें शटर स्पीड हम लोग क्या रखने वाले हैं, लास्ट कहाँ तक जा सकते हैं, ट्राइपॉड से नीचे तो और नीचे लेके जा सकते हो, राइट. 1/10 उसमें भी जा सकते हो. 1/4 इज लास्ट. 1/4 तक आप लोग ट्राइपॉड पे शूट ले सकते हो. कोई मोशन नहीं आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है. ये चीज़ जो इंटीरियर शूट कर रहे हैं मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ. It's 5:55 in the evening. We started our day at 5:30 in the morning. We covered the bird photography, we covered nature, and then after that we covered the architecture of this summer palace and interior as well. आप लोगों ने photos देख ही ली होंगी and that's how we wrap up day 2 of our mega workshop and masterclass. So stay tuned for the vlog 3 just because day 3 is pending right now. See you. Bye bye.